before going through petroleum, we are going to discuss about the carbonization, which I told you from the word when the coal is formed, that process is known as carbonization. So this is basically the destructive distillation of coal. जब हम destructive distillation करते हैं coal की, so this carbonization basically based on what temperature? This can be asked in the MCQ. This based on temperature. Okay, here we have when coal is heated. जब हम किसी भी कोल को क्या करते हैं, कोल को हम जब हीट करते हैं, कोल को जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर विल बी अराउंड 500 to 100 सेल्सियस. तो जब कोल हीट होता है 500 to 100 सेल्सियस के अराउंड, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, किसके अंदर? एयर की एब्सेंस के अंदर, एब्सेंस ऑफ एयर. तो जब एयर एब्सेंट होती है, तो जब हम हीट करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, so this coal is converted into coke, coal gas and coal tar. These are basically some properties of coal which we will discuss in another topic, particular topic. After that, these coals are basically used in coal resources in Pakistan and domestic fuel and power stations. Now let's look to the petroleum. Let's look to the petroleum. So we know that this petroleum is basically the fossil fuel. Petroleum is also the fossil fuel. Okay, petroleum किससे बना होता है? Petroleum is basically the combination of two words. As petro means, we can say rock, and oleum means oil. So this is basically the rock oil which is present in the nature. This is what? This is the rock oil. Okay, so this is also known as black gold. हम पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, और वी कैन से क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल. ठीक है. So this petroleum basically contain the dark brownish viscous fluid. This is basically what? This is the dark brown viscous fluid. Viscous fluid, और we can say non flammable. इसको हम flame जला नहीं सकते. Non flammable. As coal is flammable, but this petroleum is non flammable. Okay, so this petroleum is basically formed by the mixture of 500 plus aliphatic hydrocarbons. This is made up of mixture of 500 plus aliphatic हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है. अभी aliphatic hydrocarbons such as we can say diesel, CNG, like this. So now if we can discuss about refining of coal. कोल को हम कैसे, पेट्रोल को हम कैसे रिफाइन करते हैं, हमें पेट्रोल कैसे मिलता है. Yes, so we are going to discuss refining of petroleum. Okay, so first point, petroleum is basically refined by the process which is known as frictional distillation. Friction distillation. Okay, so now what's happened over here? First, suppose this is, we have here, you can see further. First, suppose this is the petrochemical. Now what happened here, you can see this is basically the boiling. So when we basically pass the petroleum through this with the high temperature, we will provide the temperature. So this petroleum will, we can say, make the distillation. ये basically fraction distillation बनाएगा. For suppose from here we have CNG, from here we have diesel, from here we have jet fuel. तो ये ऐसे हमारे पास सेपरेट होकर पेट्रोलियम मिलता है. जब हम पेट्रोलियम को बॉयल करते हैं
और हम पेट्रोलियम को इतना बॉयल करते हैं सो दैट देयर शुड बी नो एनी डस्ट पार्टिकल गोइंग इन दिस कंटेनर। इस कंटेनर और बीकर के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं जाना चाहिए। अगर इसके अंदर डस्ट पार्टिकल चला गया सो इट विल ब्रस्ट, ये मतलब फट भी सकता है। सो दिस इज हाउ हम इसको इतना बॉयल करते हैं कि इसका हर एक पार्टिकल रिमूव हो जाए इजीली से। हम बॉइलिंग करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, देन वी गेट दीज ऑल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, दिस इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर। फ्रिक्शन डिस्टिलेशन किस पे बेस करती है? टेम्परेचर बॉइलिंग पर। जितनी ज़्यादा बॉइलिंग देंगे, टेम्परेचर देंगे, उतना हमारे पास ये इजीली हमारे पास सेपरेट होते रहेंगे। तो ये किससे सेपरेट होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन सेपरेट होते हैं बेसिस ऑफ boiling point of temperature. So this was all about petroleum. In the next video we'll discuss about natural product, natural gas. Till that, bye bye.